सुनो न्यूज़ के खुसूसी सेगमेंट के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कॉटिश पार्लियामेंट में। किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं है, हमजा यूसुफ फर्स्ट मिनिस्टर है यहाँ पे, बड़े दबंग और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे गुजारा। हमजा साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ये बताएं कि इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं और आप एक्स फर्स्ट मिनिस्टर भी रहे, किस तरह देखते हैं इंतखाबात को, जब लेबर पार्टी के चीफ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई? आप किस तरह देखते हैं इस इलेक्शन मुहिम? The election, there's no doubt, Keir Starmer will be the next Prime Minister of the United Kingdom. That is given. This is almost certain that that will happen. For the people of Scotland, they have a choice. Do they want to have MPs who stand up for Scotland, who speak about issues like Gaza, which are very important, and speak about issues that are important here in Scotland? Or do they want to have a Labour MP who will just do what Keir Starmer says? That's the choice now. So for the SNP, my party, it will be a difficult election because Labour, as you say, is on the rise. The SNP have had a difficult 18 months. But inshallah, if we work hard, then the SNP can win the election here. अब्दुल साहब, सियासत में लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन आपका जो अंदाज़ था बड़ा जारहाना था, आपने अपने प्रिंसिपल्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये आपको बचपन से आप इस तरह दबंग हैं या सडनली आपने क्योंकि आपके फैमिली को गज़ा और फ़लस्तीन में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपको ख़ुद बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, वजह क्या बनी? I've always said in politics you should keep your intention clean. Niyat saaf rakhni chahiye. You should always keep your intention very clean. And this is my principle: keep my intention clean and don't compromise my values. This is why I was the first European leader to call for a ceasefire in Gaza when others weren't saying that. Because for me, even if I was only in office for weeks or months, then as long as I am standing up for the right issues, standing up for justice, that for me is the most important issue. So yes, I've obviously stood down from the position of First Minister, but I will still keep speaking about those issues that are very important, whether they're here in Scotland or overseas. अच्छा, ये बताएं हमजा साहब, जब आप यहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर भी थे तो स्कॉटलैंड में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ आपका कितना इंटरेक्शन रहा? उनके मसाइल कौन से जिनको इस इलेक्शन में भी अगर आपकी पार्टी आती है, लेबर पार्टी आती है, उनको हल करने की ज़रूरत है? सबसे अहम कौन से मसले? Pakistani community has been in Scotland for many decades. They're a very important part of the of Scotland. For me as First Minister, I was the First Minister for everybody. Doesn't matter what country they came from, what their origin was, but I'll always be proud of being a son of the soil, being from Pakistani heritage. Very important to me. And of course, for the Pakistani community here, lots of issues are important. Many Pakistanis are business people, so they're very interested about the cost of living crisis, and I believe that the SNP can help with the cost of living crisis. Many of them are very interested, of course, in the situation in Gaza as well, and the SNP from really the early days of this terrible conflict have called for an immediate ceasefire. So the SNP really, I think, shares the same values of most of Scotland, including our Pakistani community too. ये है हमजा यूसुफ, ज़बरदस्त दबंग अंदाज में इन्होंने एज ए फर्स्ट मिनिस्टर यहाँ पे काम किया, अपने उसूल पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इनका कहना है कि फ़लस्तीन और गज़ा पे मेरा वही मौक़िफ़ था जो पहले था, वही आए रहेगा, और फ़लस्तीन और गज़ा पर कोई कंप्रोमाइज़ कबूल नहीं है। जी।